बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये लेसन 38 है जिसमें हम शुड का यूज़ देखेंगे और इसके ग्रामेटिकल डिटेल्स को जानेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेसन। सो should it is a model which is used to indicate first इसका usage condition है कि recommendation in case of advice or in case of an obligation. So if these three are the conditions then आप word should को हम इस्तेमाल कर सकते हैं. It's a model. So examples हम देख लेते हैं. Henry should study tonight. So it can be advice, it can be a recommendation, or it can be an obligation to Henry. But in either case should make sense. Another example, one should exercise daily. This is advice to make, and you see after one should exercise daily. It's just the model. Another example, Maria should go on a diet. It's again, it can be a recommendation, it can be advice, or it can be an obligation from an instructor. Another, you should see a doctor about this problem. Again, this is advice, this can be recommendation, or this can be an obligation. So in either the three states आप should के लफ्ज़ को मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं. Second condition जहाँ पे हम should इस्तेमाल कर सकते हैं, that is about expectations, used to indicate something that the speaker expects to happen. इससे पहले हमने बात की जब हम एडवाइस करें, हम जब कुछ रेकमेंड करें, या जब कुछ चीज़ को हम ऑब्लिगेशन के तौर पे बात कर रहे हो. बट इन सेकेंड कंडीशन अगर यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन, इन कंडीशंस में भी आप शुड मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं. उसकी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं. It should rain tomorrow. It means I'm expecting it to rain tomorrow. I'm not sure though. Another example, my check should arrive next week. So I'm hoping that it should arrive next week. It's my expectation, its arrival. So I'm not sure of it. So this was about it. Then we can see further details. The expression had better, ought to, and be supposed to, they all generally mean the same as should in either of the two conditions, right? So आप expressions which are had better, ought to, and be supposed to, इनको भी interchangeably use कर सकते हैं to should in either of the two conditions we spoke before, like expectation हो या advice हो, आप इन तीन verbs को भी should की जगह पे place कर सकते हैं. अब हम इस sentence structure को देख लेते हैं. आपके पास सब्जेक्ट होगा फॉलोड बाय हैड बेटर, ऑट, शुड एंड बी सपोज टू. सो इन लफ्ज़ को आप इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑल मीन द सेम. दिस विल बी फॉलोड बाय वर्ब इन द सिंपल फॉर्म एंड नो अदर डिफरेंस. सो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. जॉन शुड स्टडी टुनाइट. जॉन हैड बेटर स्टडी टुनाइट. हमने हैड बेटर इस्तेमाल किया. इसी तरीके जॉन ऑट टू स्टडी टुनाइट. इट ऑल्सो मेक द सेम सेंस एंड द सेम मीनिंग्स. जॉन इज सपोज टू स्टडी टुनाइट. सो ऑल दीज फोर वर्ड्स कैन बी यूज इंटरचेंजेबली विद शुड एंड दे कैन बी यूज इन टू मीनिंग्स. वन, अगर आपको एडवाइस देनी हो, आपने कोई ऑब्लिगेशन हो या कोई रिकमेंडेशन हो, एक इस कंडीशन में भी यूज़ हो सकता है. और दूसरा, अगर आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट करें एंड यू नॉट श्योर अबाउट समथिंग टू हैपन, उन कंडीशन में भी आप शुड को, हैड बेटर, ought to, and be supposed to को इस्तेमाल कर सकते हैं. If you like this video, subscribe to my channel, like and share with your friends. Thanks for watching.